Hello everyone. Next topic of our chapter 4 integers are addition of integers, operations of integer, not only addition of subtractions, it may be anything. So operations of addition, operations of integers means addition or subtraction. So here in this chapter as well we are learning how to add or subtract in a number line. So we will start here. How can we add or how can we subtract using number lines only? Okay, for example, अगर हम आपको ये बोलते हैं कि represent or adding -3 in a number line. So wherever you are, from that you have to come backward. पीछे की तरफ आना है -3 तक. ओके, अगर हम लोग बोलते हैं कि सपोज एक नंबर लाइन दिया हुआ है और इसमें मान लो ये 0 है तो 1 2 3 4 तक है. 1 2 3 4. यहां पे मैं बोलता हूं कि add -3. ओके, add -3 in this number line. तो add -3 मींस क्या, हम लोग को पीछे की तरफ 3 आना है. ठीक है, तो पीछे की तरफ अगर 3 आते हो तो कितना हो जाएगा, ये यहां पे 1 है तो 1 2 3 यहां पे आ जाएगा. राइट, तो ये हो जाएगा हम लोग का एडिंग ऑफ -3 इन ए नंबर लाइन ऑफ 4. ओके, अगर हम बोलते हैं add 2 इन दिस नंबर +2. सो add +2 मींस यू हैव टू गो 1 2 फ्रॉम 4 से अगर हम बोलते हैं add +2 तो यहाँ पे 5 6 में आ जाएगा. तो 4 + 2 is 5 6. ओके, तो इस तरह से हम लोग किस तरह से ऑपरेशंस कर सकते हैं एक नंबर लाइन में, ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो मान लो एक क्वेश्चन है, सपोज देयर इज ए क्वेश्चन, इट इज आस्किंग टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर नंबर इन ए नंबर. सपोज दिस इज वन क्वेश्चन, ऐड 7 एंड -4 ऑन द नंबर लाइन. तो यहां पे बोल रहा है 7 भी ऐड करना है, -4 भी ऐड करना है एक नंबर लाइन में. तो पहले हम लोग एक नंबर लाइन लिखते हैं. ओके, तो ये एक नंबर लाइन है. मान लो यहां से मैं शुरू करता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I think 10 it will be enough. Okay, so first it is asking about 8 plus 7. So 8 plus 7 means from 0 we will take up to 7. So this is the 8 7. Okay, so first we have added 7. So here you can write plus 7. Now it is asking -4. So from here if you do -4 means 1 2 3 4. So where it will come? In 3. -4 when you will do, then it will come in 3. So that means if it is asking to represent this particular number 8 7 and -4 on the number line, so you can represent like this and you can tell the answer is 3. Right, तो यहां पे हम लोग 7 स्टेप्स जा रहे हैं और यहां पे हम लोग 4 स्टेप्स पीछे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो. ओके, सो 7 एंड 4 को सपोज +7. ओके, एंड यू वांट टू ऐड, सो एडिशन मींस एडिशन साइन एंड -4. ओके, सो सपोज दिस इज आस्किंग कि you have to add 7 plus -4. So 7 plus -4 means plus minus it will be minus. So 7 minus 4, so it will be 3. Right? So this is how 3 will be the integers which it is asking about to represent. Okay. So if it is asking, this is how you can represent this type of questions in a number line. Now let's look into this type of questions wherein the plus are less and minus are greater than. How you can do. So it's also the same thing. We have to go first +3 steps and then -8 steps. Okay. So first thing is we have to draw a number line. Okay. So let's start from here.
0 1 2 3 4 5. Here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 dot dot dot, it will goes on. So let's discuss that much only, it will come. So first you have to add 3. So add 3 means you have to go 3 steps from 0. So always you need to start from 0. So 1. So here from here 1 2 3. That means it will come here. So 3 steps. Okay. So 3 steps because this is plus. So plus 3 steps. Now from here, not from here. यहां से हम लोग को 8 स्टेप्स पीछे जाना है. तो यहां से अगर 8 स्टेप्स पीछे जाएंगे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब यहां पे आ जाएगा -5 में. तो यहां से आप अगर 8 स्टेप्स पीछे जाते हो तो ये नंबर आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर नंबर का. यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ऐड करना है तो 3 प्लस माइनस 8. ओके. सो 3 प्लस माइनस 8 मींस 3 minus 8. So 3 minus 8 means it will be -5. Okay. So this is how it will come -5. Understood? Very good. Now let's look into the next type of process wherein both are negative number. दोनों नेगेटिव नंबर है, मतलब दोनों हम लोग को पीछे की तरफ जाना है. ठीक है. तो ये भी इजी है, जो समझ रहे हो उससे पहले वाला ये भी बना लोगे खुद से. तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. चलो हम लोग पॉजिटिव ज्यादा ड्रॉ नहीं करते हैं बिकॉज उसका हम लोग का काम ही नहीं है. ठीक है. तो यहां से अगर हम लोग शुरू करें, ये मान लो 1 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड डॉट 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 साइड इट गोस ऑन. सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. Okay. So here first it is asking 8 -3. So -3 means 3 step back you have to go. So from 0 here it will come -3. So -3 steps. Okay. And from here again -7 -6 steps. So यहाँ से फिर से 6 steps. तो 1 2 3 4. तो यहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे 7. ठीक है. तो यहाँ पे फिर -6 स्टेप्स है, सॉरी. तो -6 स्टेप्स है, मतलब यहाँ से कहां तक आ जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. तो कहां पे आएगा? 9. ठीक है. तो यहां तक हो जाएगा. सो -6 स्टेप्स. So first 3 steps. So 3 and then from here -6. So 1 2 3 4 5 6 -9. So that means -9. You can verify this also. So -3 plus -6. ओके. सो -3 -6 दोनों का साइन सेम है तो हम लोग ऐड करेंगे. सो 6 plus 3 is 9. सो -9. सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर नंबर इन ए नंबर लाइन. ओके. इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. Now on the basis of those all examples which we have learned related to the number line, उसको अगर आप अच्छे से समझे हो then you can understand the rules for additions of integers also. These are basically based on those all examples. First I have given the examples so that you can understand. So here it is asking rule number 1 is अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर होता है, if there are two positive number or two negative number, both are same sign, okay, either positive or negative, then what we used to do is then we add देंगे. ओके. सो we add their value, हम लोग उसका वैल्यू को ऐड करेंगे और वो जो कॉमन साइन है दोनों का either प्लस और माइनस वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले लो जिसका वैल्यू सेम होगा. मान लो +17 एंड +19.
अब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 + 7 इज 16, सो 6 1 कैरी 36। तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये हम लोग यहाँ पे देंगे। और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 23 ये पॉजिटिव में है, मान लो, और एक पॉजिटिव नंबर 54। ओके, तो इसको ऐड करोगे 7 7, सो पॉजिटिव। तो वेरी सिंपल है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर दो नेगेटिव इंटीजर, मान लो आप नेगेटिव इंटीजर एग्जांपल लेते हैं 56, नेगेटिव इंटीजर ये भी है मान लो 33, तो आप हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये दोनों को भी ऐड करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, नेगेटिव साइन है लेकिन करना ऐड है, तो 6 + 3 इज 9, 5 + 3 इज 8। Okay, so here we will use negative sign. So this is -89, right? So इसी तरह से हम लोग और एक एग्जांपल अगर लेते हैं, मान लो -4 and -7. So 7 + 4 is 11. So 11 we will use -9. So very simply, जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर या तो दो नेगेटिव इंटीजर होता है, whenever it is two positive integer or two negative integer, we will add those two number and use the common sign. That means common sign is either plus or minus, whatever the sign is. Rule number 1 is very easy. So for example, here our question is there. It is asking about add the integer this and this. So here you can see this is also negative sign, this is also negative sign. But it is asking for addition, not subtraction. So what you have to do is you have to add. So for adding, this is the property number 1. कि whenever these two values are same sign, then we will add the two numbers and use the common sign. So here let's add. So -4 2 6 5 and -8 2 3. You have to write the numbers from one places. So this. So let's add this. 8 + 5 is 8 + 2 is 10 and 3 is 13. So 3 1 carry. So 7 + 2 is 9. 9. 3 + 2 is 5 and 4. And we'll use negative sign. So minus. So that is how you can say -4 2 6 5 plus -328 is equal to -4 5 9 3. So इस तरह से this is how you can solve the question related to the first rule. Okay, कि if both of the number are same sign, then we will add both the number and use the common sign. Okay. Now what is rule 2 is said. Second rule क्या है कि if there are two integers, दो नंबर है मान लो, one is positive and another is negative. So at that time we used to find out the difference. हम लोग उसको subtract करते हैं, उसको ऐड नहीं करते हैं, पहले ही यहाँ पे बोलते हैं कि ऐड करना है। तो अगर ऐड करना है दो इंटीजर को जिसका साइन अलग अलग हो, okay, so when we want to add two integers whose sign are different, then first we used to find the difference of the two number. वो दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे and we will use the sign of that number only which is the higher value. जो बड़ा नंबर होता है उसका हम लोग साइन यूज करते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। Let's try to find out with the try to understand with one example. Suppose here -36, we have one integer is -36 and another integer is 19. Okay, plus 19. So these are the two integers. Now it is asking us to add. भले ही ये ऐड करना है, ध्यान दो कि भले ही इसको ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये दोनों को ऐड कर देंगे, नहीं करेंगे क्योंकि साइन अलग है। तो ये साइन अलग है, दिस इज नेगेटिव साइन एंड दिस इज पॉजिटिव साइन। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर। सो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले बड़ा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। So what are the properties of integer? There are some properties of integer. If you know the properties of integer, you can understand very betterly. So first property which we have is closure property. So closure property itself is, you can understand, closure means band. Okay. So close property. So whenever you are adding any two integer, the sum will always be an integer. So
to understand this, first you have to know what an integer is. So definitely you are aware about that whenever we add negative numbers with the whole number, then those all numbers become negative, integers. That means studying with all the negative number and all the whole numbers. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, and this side minus 1, minus 2, 3, 4, dot 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 up to infinity, and this side also infinity. So these all are the integers. So whenever you will add two integers, so let's see exact how it is. Suppose you are adding 1 plus 2, 3. So 1 is also an integer, 2 is also an integer, right? So you can see after adding 1 and 2 it is coming 3. So 3 is also an integer. Okay. Suppose you are adding minus 4 plus 2. So minus 4 plus 2 means you have to find the difference. About that second rule, what second rule says? If two numbers have different sign, then we have to find the difference. So 4 minus 2 is 2, and we will use the negative sign. So here it will come minus 2. So minus 4 is also an integer, and 2 is also an integer, and we find the answer minus 2, which is also an integer. So the first closure property says whenever you can take 0 also. Suppose 0 minus 7 is equal to minus 7. So whenever you are adding, so sorry, this is 0 plus minus 7. So definitely answer will come finally minus 7 only. So 0 plus minus 7 is equal to minus 7, which is also an integer. So 0 is an integer, minus 7 is an integer, so minus 7 is also an integer. So whenever you are adding any particular value, these are the small examples I have taken. You can take big examples also. For example, minus 4, 3, 8. Okay, plus suppose another number you take instead of minus 3, 2, 5. Okay, so whatever the answer will come, it will be an integer only. कभी भी आप दो इंटीजर को जोड़ते हो तो उसका आंसर जो होगा वो इंटीजर ही होगा. ये कॉमन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ इंटीजर का. ठीक है. सेकंड इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. सो व्हाट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज सेइंग कि इफ यू एड एनी टू पर्टिकुलर नंबर, so the result is also always with the inverse of that 2 also. For example, if you are adding a plus b, whatever the answer will come, it will be equivalent to b plus a also. You can take an example instead of a and b, so you will be understand betterly. Suppose 4. So 4 plus 3 is equal to how much? 7, right? So what do you think? 3 plus 4 how much? It will be 7 only. So कभी भी अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हो और उसका ऑर्डर चेंज करते हो, मतलब जो फर्स्ट है उसको सेकंड में दे देते हो, जो सेकंड में है उसको पहले दे देते हो, तो भी उसका सम में कोई चेंजेस नहीं आता है. द सम विल रिमेन द सेम इफ इवन यू आर चेंजिंग द प्लेस ऑफ दिस टू इंटीजर्स. ओके, यू टेक अनदर एग्जांपल. व्हाट डू यू थिंक? 7 plus 982 will be equal to 982 plus 7 or not? Yes, it will be. You can check 7 plus 982 will be 989, and 982 plus 7 will be also 989. So these two are equivalent. So this is how the second property, which is commutative law of addition. Commutative law of addition is saying even after interchanging the places of two digits, the sum will not change. Sum remains same. So a plus b is equal to b plus a. Now next one property is associative law of addition. So associative law of addition is also the same as like commutative law of addition, but here it is the case of 3 digit. Okay, तो 3 digit हम लोग कर लेते हैं. So a plus b plus c. So मान लो हम लोग a और b को पहले ऐड करते हैं, उसके बाद c को ऐड करते हैं, तो भी जो आंसर आएगा अगर सेम नंबर होता है a b and c, तो a plus b plus c में भी सेम आंसर आएगा. Means if you add these two first or these two first, it doesn't matter. In case of addition, associative law of addition, it will be same. So let's take an example. For example, 3 digits are, okay, I am taking some examples, minus 5, minus 7 and 3. Okay,
Suppose these are the three integers and you want to verify this log. Is this log is true or false? Okay. So a plus b, मान लो ये a है, b है, c है, तो a plus b means -5 plus -7, okay, plus c. So plus c means ये दो को अलग से लिखते हैं, c is 3, so plus 3. तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को. तो लेफ्ट साइड और सेकंड साइड में हम लोग का क्या मिल जाएगा? अब दोनों माइनस में है तो स्क्वायर करेंगे हम लोग. -7 plus 5 is -7 plus 5 is 12, right? So it will be -12 plus 3. So -12 plus 3, when two signs are different, then what we will do is just we will subtract and find the use the sign of less value, sorry, greater value. So here if you subtract it will become 9, and you will use the negative sign, so -9. So -9 is the coming in left hand side. So let's now solve first adding these two numbers b and c. Okay, so here -5 is here a, so leave a. Now we will add b and c first. Okay, so to add b and c, -7 is there plus 3 is there. Okay, so let's add this -5 plus this one, two different signs, so we will subtract. So how much? 4, and we will use negative sign, so -4. Okay, so -5 plus -4, -5 plus -4 is equal to how much? -9. So can you see this is also -9 and this term also -9. That means it doesn't matter कि आप पहले a और b को जोड़ते हो या पहले b और c को जोड़ते हो. तो इसमें से ये दोनों में से पहले आप ये दो को जोड़ सकते हो, फिर उसको जोड़ सकते हो, या तो पहले ये दो को जोड़ सकते हो, फिर इसको भी जोड़ सकते हो, which is called the associative law of addition. So associative law of addition is useful for three number. Whenever the three integers are there and you are adding, so it doesn't matter that first you have to add first two number. You can add the last two number also, and then you can add the first two number also. Okay. So this is all about the associative law of addition. Now successor and predecessor. Till now you all have learned about the successor and predecessor of counting number or natural number. Now we will discuss about successor and predecessor of integer. Okay. Why it is very important? Because normally usually you know that successor means whatever the number. If a is the number, so if you add 1, that will be the successor, and if a is the number, if you subtract 1, that will be the predecessor. Okay, this is successor and this is predecessor. But here we are not talking about the counting number. Here we are talking about the integer, so you have to be very careful about it. Okay, so suppose it is asking to find out the successor of any particular number. For example, it is asking find the successor of 19. So successor of 19, it is very easy that 19 plus 1 is 20, right? If it is asking the successor of -18, then what do you think? -18 का -19 होगा? No. What it will be? -18 plus 1 will be -17. यहाँ पे हमने आपसे पहले we have already discussed the negative whenever we go back, that will be the greater number. So -18 से -17 ज्यादा है. So this is how the successor of 18 will be -17. Okay, very interesting. Now if we are talking about predecessor, these are the successor. Okay, now if we are talking about predecessors, what happens in predecessors is, suppose I am asking what is the predecessor of 10. So it is very easy that 10 minus 1 is the 9. 9 is the predecessor of 10. But if I am asking what is the predecessor of -20, then it will be -20 minus 1. Okay, so -20 minus -1 will be how much? It will be -21. So predecessors of -20 will be 21. Okay, so predecessors like this. So whatever the number it is asking for, that you have to subtract by 1. Okay, so to find out the predecessor. That's all about the successor and predecessors of a number. Now I hope you can do all questions of this exercise 4B. Okay, so your homework is
all about exercise 4b. Okay, so try to solve in homework all the questions of exercise 4b. If you have any doubts in any particular topic, you can ask. Thank you. Have a good time.